Jai Hind everybody. So today I am starting with question number 6 of exercise 13.8, and this is the question. A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. कोई जो है आपका हेमिस्फेरिकल टैंक है वो जो है 1 सेंटीमीटर थिक आयरन शीट से बना हुआ है. इफ़ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक. अगर जो है उस हेमिस्फेरिकल टैंक की जो रेडियस है वो 1 मीटर है तो हमें ये निकालना है कि इसको बनाने में कितने आयरन का वॉल्यूम यूज हुआ है. तो यू आर गिवन इनर रेडियस आर दैट इज गिवन 1 मीटर. I am converting it into centimeter. This will be equal to 100 centimeter, and the outer radius will be equal to this inner radius plus the thickness, that is 1 centimeter. So this will be become 101 centimeter. ये यहाँ से यहाँ तक जो है this is the inner radius small r which is given 100 centimeter. How much? 100 centimeter. This thickness is 1 centimeter. ये थिकनेस कितनी है आपकी? 1 सेंटीमीटर. देयरफॉर फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस आउटर रेडियस दिस विल बी इक्वल टू दिस 100 एंड प्लस दिस थिकनेस दैट इज 101 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक दिस हेमिस्फेरिकल टैंक. तो वॉल्यूम ऑफ आयरन विल बी गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ दिस outer hemisphere minus volume of this inner hemisphere, which is 2/3 pi into capital R cube minus 2/3 pi small r cube. 2/3 pi we can take common, so here we will left capital R cube minus R cube. This will be 2/3 pi can be placed by 22/7 into capital R is 101 cube minus small r is 100, so 100 cube. 2/3 into 22/7. When we will multiply this number 3 times, yani 101 into 101 into 101, it will become 1030301 minus when we will multiply this will become 100. ठीक है, 1 2 3 4 5. okay, 1 2 3 4 5 and one more zero will be there. One more zero will be there. When we will subtract this, we will get 2/3 into 22/7, and here we will have 30301. When we will multiply all these and we will calculate it, we will get 63487.81 centimeter cube. So this is the volume of iron which is used to make this hemispherical tank. How much? 63,487.81 centimeter cube. It's okay. Now this is question number 7. You find the volume of a sphere whose surface area is 154 centimeter square. आपको जो है उस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो व्हाट यू आर गिवन? सरफेस एरिया इज गिवन 154 centimeter square. Let the radius is r. Then according to question, the surface area of the sphere is given by 4 pi r square. It is given 154. When we will calculate this, the value of r will come 7/2 centimeter. Now volume of sphere that will be given by 4/3 pi r cube. That is 4/3 into 22/7, and r is 7/2 whole cube. So when we will solve this, we will get 179.67 centimeter cube. So what is the volume of the sphere? 179.67 centimeter cube. It's okay. Now this is question number 8. A dome of a building is in the form of a hemisphere. Dome, गुंबद, जैसे बीजापुर का गुंबद है, ये किस फॉर्म में बना हुआ है कि डम हेमिस्फेरिकल फॉर्म में बना हुआ है डम. From inside it was whitewash at the cost of रुपी 452.56. इसको जो है अंदर की तरफ से वाइट वॉश किया गया तो कितना खर्चा लगा? 452.56. यू आर गिवन कि टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द हेमिस्फेरिकल डम दैट इज 452.56, एंड इट वाज आल्सो गिवन इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज रुपी 2 per meter square.
जो आपका रेट ऑफ वाइट वॉशिंग है 1 मीटर स्क्वायर का, वो आपको दे रखा है 2 रुपये। तो यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डंप, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डंप। देखो टोटल पैसा कितना लगा उसमें 452.56, ओके, एंड 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना था ₹2। तो देयरफॉर इनसाइड सरफेस एरिया विल बी गिवन बाय दिस कॉस्ट 452.56 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो व्हेन यू विल डिवाइड दिस यू विल गेट 226.28 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द इनसाइड area of the hemispherical dump? That is 226.28 meter square. Now the second part is find the volume of the air inside the dump. So what will be the volume inside the dump? That will be the volume of hemisphere. Volume of hemisphere. For finding the volume, we should have the radius. Let we are assuming the radius is r. Radius is r. According to question, this inside surface area is given 226.28 and the inside surface area of this hemispherical dump will be equal to 2 pi r square. It means 2 pi r square will be equal to 226.28. According to question, 2 pi r square will be equal to 226.28. Now we are inserting the value 2 into pi is 22/7 into r square is equal to 226.28. Therefore r square will be, this 7 will multiplied here, so 226.28 into 7 divided by 2 into 22. When you will do this, 42 to the 44, when we will divide this we will get 5.14 into 7, and when we will multiply this will become 35.98, which is approximately equal to 36. Okay, so value of r square is 36. Therefore r will be equal to square root of 36, that is 6 meter. So what is the radius of the hemispherical dump? That is 6 meter. How much? 6 meter. Now volume of air inside the dump, that will be equal to volume of the hemisphere, and which is given by 2/3 pi r cube. Now put all the values. 2/3 into pi is 22/7 into the radius is 6, so 6 cube. When we will solve this we will get 452.57 meter cube. So what is the volume of the air inside the hemispherical dump? That is 452.57 meter cube. This is question number 9. कि 27 solid iron spheres each of radius r and surface area capital S are melted to form a sphere with surface area S dash. 27 आयरन स्पेयर्स हैं, ये 27 आयरन स्पेयर्स हैं जिसकी रेडियस कितनी है? रेडियस इज r, ओके, इट्स रेडियस इज r एंड सरफेस एरिया इज हाउ मच? S. सरफेस एरिया इज S, कैपिटल S. इसको जो है मेल्ट करके जो है एक बड़ा स्फीयर बना दिया, एक बड़ा स्फीयर बना दिया जिसका सरफेस एरिया कितना है? S डैश. दिस इज द सरफेस एरिया. हाउ मच? S डैश. तो क्वेश्चन इज दिस कि फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर. दिस इज द न्यू स्फीयर, दिस इज द न्यू स्फीयर. कहता है इसकी रेडियस निकालो. तो लेट द रेडियस ऑफ दिस न्यू स्फीयर इज कैपिटल R, कैपिटल R. नाउ व्हाट विल हैपन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ दीज 27 balls, these 27 small balls, volume of 27 small spheres will be equal to volume of one new bigger sphere. So volume of one small ball will be 4/3 pi r cube. R is here, okay, given 27 बॉल का कितना हो जाएगा? 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब. दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई. और व्हाट इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल? दैट इज r, कैपिटल R. देयरफॉर 4/3 पाई एंड 4/3 पाई विल बी कैंसिल्ड आउट. 27 r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब. देयरफॉर r विल बी 3r. So what will be the radius of new sphere? That is 3r, 3 times the radius of small sphere. Now question second part is this.
ratio of S and S dash. Ratio of S and S dash. So what was S? S was the surface area of the small sphere, and S dash is the surface area of the new and which is bigger sphere. So now surface area of small sphere divided by surface area of new sphere, that will be equal to 4 pi into small r square divided by 4 pi into capital R square. 4 pi will be cancelled out. This will be left small r square upon capital R square. Small r square is small r square and capital R is equal to here 3r, 3 small r. So r square upon 9r square, which is 1 upon 9, and in the ratio 1:9. So what is the ratio of their surface areas? That is 1:9. 1:9. And this is the last question of this exercise. A capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm. कोई मेडिसिन है, कैप्सूल है उसका, वो आपको कैसा है, स्पेरिकल शेप का है, स्पेयर शेप का है, जिसका डायमीटर है 3.5 mm. तो यू आर गिवन रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल shaped capsule r, that will be equal to diameter upon 2, and the diameter is given 3.5 mm. Therefore the radius of spherical shaped capsule small r will be 3.5 upon 2 mm. Question is this: how much medicine in mm cube is needed to fill this capsule? कि इस कैप्सूल में जो है कितना मेडिसिन फिल होगा और किस यूनिट में आंसर देना है, mm क्यूब यानी मिलीमीटर क्यूब में. तो कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल, इसमें कितना कैप्सूल आएगा, कितना मेडिसिन आएगा, ठीक है. कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल यानी इसमें कितना कैपेसिटी है, कितनी मेडिसिन आ सकती है, दैट विल बी गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेरिकल शेप्ड capsule, that is 4/3 pi r cube. Now put all the values. 4/3 is here, pi is 22/7 and r is 3.5/2 whole cube. Now 4/3, 22/7, 3.5/2 whole cube is 3.5/2, 3.5/2 into 3.5/2. When we will solve them, we will get 22.46 millimeter cube. So this is the volume of medicine in the spherical capsule. How much? 22.46 millimeter cube. So that's all for today. Thank you very much.